बाकी सबको क्लोज कर दे रहे। अब यहाँ पे मैं बीबीए के फ्रॉम बीबीए के ब्रैकेट एक्स्ट्रा रैक। और कोई कोई फील्ड ले लेते हैं। अब जैसे इसमें ERNAM है, ERNAM, ERNAM ले लिया। ओके, मटेरियल PKPF हटा दें। कस्टमर का भी जरूरत नहीं, रहने देते हैं। हाँ, और इसमें आ जाता है NETWR और WARS, WAERS। ओके, अब यहाँ पे एट सीमेंटिक। हाँ, सीमेंटिक। अब इसमें हमारा वी कैन यूज, चलो सीमेंटिक पहले यूज कर लो, सीमेंटिक डॉट अमाउंट करेंसी कोड, राइट, WAERS। चलो हट जाएगा, क्योंकि कॉमा डाला हुआ है, इसलिए नहीं हटेगा। हम्म। AUART। अब अच्छा, चाहे चाहे। प्रोजेक्शन, अच्छा प्रोजेक्शन यहाँ पे मटेरियल यूज किया है, मैं नहीं यूज करता हूँ, राइट, मतलब ऐसे यूज कर सकते हो। मटेरियल भी डाल दो फिर आप, हाँ। एस मटेरियल, कॉलम वाज अननोन, कॉलम अननोन दिखा रहे हैं। RK, नेटवर्क। ये तो प्लांट हो गया यार, ये होगा शायद क्या, WAERK। किसका देख रहे हो आप? अरे करेंसी का WAERK। ये क्या दिखा रहा है, सही नहीं है। हेडर में नहीं है क्या? हेडर था तो नेट कंट्रोल this is BBAK table. Here I will show डब्ल्यू can ए ई आर के है। डॉक्यूमेंट any करेंसी। WR डॉक्यूमेंट करेंसी, वही करेंसी फील्ड चाहिए था। हाँ, WAERK। WAERK, ठीक तो है। हाँ, सही है। सबको नजर आ रहा है।
NETWR नहीं है क्या, PR है क्या? PR। NETPR? नहीं, NETPR तो नहीं है कुछ भी। अमाउंट फिल BBAT में है ना, टोटल फिल कैसे? हमें क्या नाम? DT फील्ड का क्या नाम है? NETWR है। नहीं, NETWR तो नहीं है कोई फील्ड। है ये NETWR। NET? हाँ, NETWR। हाँ, NETWR है, नेट वैल्यू। NETWR। अब क्या है, इसी के ऊपर डालना होता है। अब एरर नहीं आ रहा है? हाँ, इसके ऊपर डालना, NETWR के ऊपर डालना होता है ये मटेरियल। हम्म RIAL मटेरियल। इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। आइटम, आइटम भी यूज नहीं कर रहा हूँ, हटा देता हूँ मैं इसको। अब ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, डाटा प्रीव्यू। इतना रिकॉर्ड मिलेगा मुझे, 9999। नंबर ऑफ रिकॉर्ड पता करना तो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एंट्रीज, ये देखो इतना है, सेवन हम्म सिक्स वन 7614 रिकॉर्ड है इसमें। अब मैं हम्म क्या करता हूँ, यूजर नेम PTINST, और भी कोई यूजर नेम है क्या इसमें? अगर मैं पता करना चाहूँ तो ऐड फिल्टर ऑन UNAR, ये सब यूजर है। हम्म तो मैं मान लो इसको लेता हूँ, ठीक है? ये आया राइट। अब इसके कितने नंबर्स ऑफ एंट्रीज हैं? 7 है। 7 इतना कम। ज्यादा है शायद 7 से तो। ओके, ये रिपीटेड हुआ होगा ना, मैं हम्म मटेरियल यूज कर रहा हूँ ना, सेकंड एसोसिएशन यूज कर रहा हूँ, वो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ, रिपीटेड हो रहा है। बता देता हूँ, देखो, सिंपल लेता हूँ, अब रन करता हूँ। साथ आया, वो मटेरियल था ना इसलिए रिपीट कर रहा था। हम्म उसका राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक करके डिस्टेंस पता कर सकते। चल, ठीक है। सो 7 रिकॉर्ड आया, तो ये मुझे 7 रिकॉर्ड चाहिए। अगर मान ली ये यूजर है, ये यूजर लॉगिन किया। अच्छा, मेरा यूजर क्या है भाई? 1 मिनट। मेरा यूजर है, आपको कंट्रोल S01 पे।
156 000 156 000 156 एंटर। यार एक तो होना चाहिए था, बॉर्डर भी क्रिएट करने की एक्सेस नहीं है। ठीक है, चलेगा, पुराना वाला ही चेक कर लेते हैं, लेकिन ये हार्ड कोडेड करना पड़ेगा, सिस्टम यूजर लेगा नहीं। ओके, सो अब हम इसके लिए टीसीएल डीसीएल क्रिएट करेंगे। सो 8 न्यू एक्सेस कंट्रोल ECL CDS sample 08 08 ECL CDS underscore sample underscore 08। यहाँ पे आया प्रोटेक्टेड एंटिटी। अब इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सैंपल हो गया, पीएफसीजी हो गया, इनहेरिटेड हो गया, एस्पेक्ट हो गया, ये वाला सेलेक्ट करते हैं। एक मिनट देख लें। ओके, इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलिमेंट, ये वट एवर द यूजर नेम, ERNM, if username is like if you are logging, if you are created some sales order, so like 10 sales order, that 10 sales order only it will CDS view will display. So for that we are defining user condition. Based on the user, it will display the data for the particular user only, and other than that user, it will not display. User condition can be combined with the access rule using literal conditions and PFCG condition and inherit condition. और ये जो कंडीशन है, यूजर कंडीशन, ये हम किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको लिटरल्स कंडीशन जो हम लोग काम किए, पीएफसीजी कंडीशन काम किए, इनहेरिट कंडीशन काम किए, सबके साथ असाइन कर सकते हैं। एट लाइक ए कंपेयरिंग विद द सेशन वेरिएबल session dot user in the CDS DDL. It is not currently possible to use session variable on the right side of the condition in the DCL. DCL में हम लोग राइट साइड में सेशन यूजर क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग ये अप्रोच से जाते हैं। यानी अभी जैसे हम लोग ने बहुत पहले क्रिएट किया था, हाँ, सेशन वेरिएबल, जब शुरू में क्लास स्टार्ट हुआ था तो सेशन वेरिएबल क्रिएट किए थे। आ गया क्या? पैरामीटर सीडीएस व्यू, ये साइड पे। हाँ, इसमें हम लोग ने सेशन क्लाइंट किया, सेशन वेरिएबल जो होता है हम लोग का, यहाँ लेफ्ट साइड में हम लोग क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मतलब ये डायरेक्ट पास करते हैं सेशन वेरिएबल सेलेक्ट क्वेरी में। और इसको राइट साइड में भी हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट क्वेरी, जब सीडीएस क्रिएट करते हैं। whenever you are creating, we are creating the CDS view। ओके, ये है सेशन क्लाइंट, ये है सेशन वेरिएबल, वेयर कंडीशन में वी आर पासिंग द सेशन वेरिएबल एंड ऑफ सेशन
या बार बार ड्रॉप आउट हो जा रहा है। लो। या बार बार ड्रॉप आउट हो जा रहा है। क्या पता मुझे, नेटवर्क का दिक्कत होगा आपको शायद। ओके, so here we are created, see here, define access policy, something different, right? Define access policy, ये access policy है। ये policy में कह रहा है कि define aspect और DCL क्रिएट कर रहे हैं। select from, ये हमारा CDS व्यू है। with user element, आपको यूजर एलिमेंट क्या है हमारा? यूजर एलिमेंट है हमारा ERNAM, ये वाला फील्ड है, राइट? अब ERNAM को इधर दे सकते हैं। ओके, ओके, रिसीव, लो। हाँ हेलो। हम्म। एक बार ऊपर तो करना, अपने ऊपर वाला क्या दिखाया था एक बार? हाँ यही। ये ये हाँ। ट्रू फॉल्स है, और ये एस्पेक्ट कंडीशन। अभी मैं यूजर कंडीशन पे हूँ। यूजर कंडीशन हम्म में मेरा ये ऐसे डालते हैं, लेकिन अभी इसमें क्या है? एलिमेंट है, राइट? एलिमेंट कौन सा लूँ? सो मैंने यूजर लेवल पे डाला है ERNAM, और हम्म। यहाँ पे मान लीजिए VKORs ही रहता है क्या? VKORs, VKORs, हाँ VKORs ही रहता है ना। सो आई विल यूज VKORs फिल, एलिमेंट। क्या आ रहा है? ओके, ठीक है। ऑडिटिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा सोर्स दिस और एस्पेक्ट दिस, राइट? हैज हम्म नो ऑडिटिंग डिक्लेरेशन। ओके, वही सोच रहा था, इसलिए इधर ये आ रहा है ऑडिटिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम लोग कुछ देते हैं इसके। अच्छा। ओके, देते हैं 1 मिनट, क्या देते थे याद नहीं है हमको। चल, क्या? ओके,
auditing declaration. So इसको कुछ एनेबल करना है, एनोटेशन देना होता है। एक सेकेंड, मैंने इधर पे ऑथराइजेशन क्या डाला है? नॉट रिक्वायर्ड डाला है, राइट? चेक डाले। चेक। नाउ I will activate it और check what is the error. ये तो हो गया एक बार शायद। अच्छा, ये दूसरा वाला है। Auditing declaration, auditing declaration, personal data, पर्सनल, यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। allowed metadata extension, allowed metadata extension, personal data, तो personal data, personal data dot activated, error, error, error file creating serial. ये मैं दिया हूँ, ये है। If you don't can you, yes, it's not a activity also, yes. Okay, now I have done the activation. So why it is not something इसका जरूरत नहीं है।
Serious access control authorization had no access control runtime behavior full access. TCL 08. Let me delete this. Okay. Now going to here. Now I will define access control for this. So here I can give DR and here VK words. Okay, let me go to some other view. शायद सिंटेक्स में कोई दिक्कत है, सिंटेक्स देना पड़ेगा अपने को। Syntax is correct only. Okay, अच्छा let me check PDF. Extract users. Okay, this one I'm creating aspect condition. Okay, this is my mistake. So left side host not supported. Here what happened, right? Where ER and AM equal to here, suppose I'm giving 8 वाला है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला ये 03 लिख रहा है, 03 को मैं रन करता हूँ, ओपन डाटा रिव्यू में। सो 03 में वैल्यूज है और कौन सा था 03 07 07 पे वो रन करो। ये 07 में मैं ऐड करता हूँ एक फील्ड एक्चुअली कर, सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ERNM। नाउ एक्टिवेट इट। कौन सा था 7 था 7 save it 7
Here, what I will do, seven टू में क्या हुआ? ओके, सो आई विल redefine it. सो redefine से क्या होगा? ओल्ड वाला डिसेबल हो जाएगा, मेरा ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ERNAM इक्वल टू एस्पेक्ट यूजर। ये होता है हमारा यूजर कंडीशन। कॉलम element doesn't exist in entity 007 sample 07 SM। ओके, इधर नहीं है राइट, दूसरा वाला ERNAM ऑर्डर बाय 7 हो गया ये। So in 02 इसको रन करके आई एम गेटिंग नथिंग डाटा। ओके, बिकॉज माय यूजर इज in my user I don't have anything. I will comment it. Where condition compulsory रहता है right इसमें। ओके, नहीं where compulsory नहीं, ये सबको कमेंट करना पड़ेगा। तो yeah, now I have done the redefinition with full access, sub access. Every data it's having the access. Open with data preview. अभी सब डाटा मिलेगा आपको दिखने। ERNM में मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ब्लैंक आएगा रिकॉर्ड, बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल विथ माय यूजर आईडी। तो now again I will run 007. See, there is no data, correct? So like this user condition will work. Okay, वो जो मैं क्रिएट कर रहा था, which I am creating here demo, this one is for aspect condition. Okay, not for
user condition, aspect condition. So in aspect condition, left side host expression not supported in the language, the only comparison operator. So here what a defined access policy. So here what it is creating defined access policy. This is the access policy name and define aspect for this DCL. Define DCL aspect. Select from this CDS view. So what happened here is the CDS view. Okay. And here I have created aspect, right? So now what I have to do? So suppose here I have created define aspect policy for ERNAM and select from this CDS view and defined by sales of, right? Now, again, I will create one more role 008. Yeah, this is. So here I will create access control. This L, yes, aspect 01. Here I will define simple role. Shift. See here, aspect user, right? Here only this ERNM you can give ERNM. This is also one example. This is literal value, this is user condition. Okay. So this is user condition. Here also you can give. Okay. So now I don't want to give literal values and user condition. I want to give aspect conditions. So how to give aspect conditions? So there I have created the aspect condition where it is. I will work this. Aspect condition. Yeah, this is my aspect conditions. I will copy this and I will find here. Okay, what is the syntax here? Is where sales of aspect. Let's say now PKORC equal to aspect. वो सेमीकोलन आ जाएगा बस शायद। Now it is okay. ये बस एक्टिवेट नहीं हो रहा है. Select from YDDL as sample 01. Select condition falls in the one that was created. And go
Let me go to that. This is role for literals, and below is aspect users. This is for user condition. This is the example of user condition. And Hmm. here actually you can see the define, this is access aspect condition. Here define access policy, which is created. ACL access policy 09, ACL access policy 09, 409 inherited ARM PORC. Okay, and here we go to here see, okay. Okay, I got it now. Suppose but while creating this, we are getting error. Create define policy aspect 409, use filter 02. There is some, actually, there is some process to create access whenever you are creating access policy, right? For any Hmm. CD. So in CDSO, you have to give something here annotation. That one I forgot actually. Hmm. Okay. हाँ वही एनोटेशन तो देनी पड़ेगी ना कुछ। अभी वो बट आप उसमें उसके लिए इसका बेसिक फंडा क्या है? आप बट जीरो हाँ एट हाँ। के लिए आप TRNM के बेस पे आपने VKORZ के फिल्टर बनाया, फिल्टर यूज करने के लिए यहाँ पे एस्पेक्ट कंडीशन बनाए फिल्टर करने के लिए। अब ये एस्पेक्ट कंडीशन आप कोई भी सीडीएस व्यू में जाके यूज कर सकते हैं। ये है फंक्शन। हम्म। कोई सीरियस व्यू में आप जाके वेयर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे ये 08 के लिए मैं बना दिया है, राइट? अब हम्म। इसको मैं लेके ये वाला जो नेमिंग है एस्पेक्ट कंडीशन, ये लेके मैं कहीं कोई भी सीरियस व्यू में जाके ऐड करके फिल्टर कर सकता हूँ, राइट? अब उसके लिए आपको बेसिक वाला जो है, इसमें कुछ तो डिफाइन करना होता है। लेट मी सर्च वन मोर टाइम। इसको बोलते हैं एस्पेक्ट कंडीशन। ओके, यूजर कंडीशन नहीं बोलते, वो मेरा मिस्टेक हुआ था। यूजर कंडीशन अलग है। यूजर कंडीशन समझ गया ना, सिंपल है वो, ज्यादा हम्म। कुछ एस्पेक्ट यूजर पास कर, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है जब आप क्रिएट करते हो रोल, बाय डिफॉल्ट आता है वो। हम्म। देखिए हो ना, आता है ये- क्रिएट करते इसको। हाँ एक्सेस कंट्रोल में नहीं आता। एक्सेस कंट्रोल में, एस्पेक्ट कंडीशन में नहीं आता। एस्पेक्ट कंडीशन में ये सिंपल रहता है। ये थी यूजर एलिमेंट ERNM, इसके बेस पे फिल्टर करके वो भी KORZ डिस्प्ले करता है। यस यस हाँ। ये जो क्रिएट किया है KYC, उसके बेस पे आ जाएगा वो। हम्म। So define access control. So here it's
define aspect for VCL for this ये रहा department ना and डिफाइन एक्सेस पॉलिसी। access policy for यार पहले हमने CDS व्यू बनाया, करेक्ट। हम्म। आफ्टर दैट TCL एस्पेक्ट बनाया। ओके, पहले TCL एस्पेक्ट बनाएंगे, देन एक्सेस पॉलिसी बनाएंगे। और ये पहले क्या बनाया था, CDS एम्प्लॉय के लिए हम लोग ये बनाया एस्पेक्ट, फिर ये एक्सपेक्ट के लिए बनाया हम लोग ये। अच्छा, अब यहाँ पे क्रैम्प्ड ऑन दिस यूजर, ये भी कुछ क्लियर नहीं बता रहा है। ओके ठीक है, यहाँ से करते हैं डिफाइन एस्पेक्ट। ओके, एक काम करते हैं, इसको वापस क्रिएट करते हैं इसको। डिफाइन एक्सेस कंट्रोल DC एस्पेक्ट कंट्रोल। जेनरिक एस्पेक्ट। अच्छा, ये तो मैं किया ही नहीं था ना, क्रिएट कर रहा हूँ, इसको क्रिएट कर। ओके, now this is created for this, yes, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये जा रहे हैं। सिंटैक्स है पर है, लेकिन ये क्रिएट ही नहीं हो रहा है। ओके, इसको मैं देखता हूँ ना, कुछ प्रोसेस में मैं इधर उधर गड़बड़ा गया है, एक बार देखता हूँ ना। ठीक है। क्या विजिट हॉस्पिटल। हम्म। चलो कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है अंकल।